that has begun in the 68 assembly seats in the state of Himachal Pradesh, the hill state that is poised for a keen electoral post. Earlier, what was suggested to be a bipolar contest has now turned into a triangular contest with the entry of the Aadmi party. Now, the BJP hoping to reverse the historical voting trend which has seen Himachal Pradesh voting out the incumbent every 5 years over the past 4 decades. But this time around, the BJP is banking on twin attractions. One is the double engine ki sarkar, and the other is the Prime Minister's personal appeal to the people to vote for the Lotus. On the other hand, the Congress party seems to be relying heavily on the history and the tradition that is being followed, so much so that Rahul Gandhi did not even attend a single campaign meeting in the state of Himachal. Yet nothing is still off the table with the entry of the Aadmi party, which would be hoping to replicate the Punjab-like elections. So you have been there on ground from day one, campaigning rigorously. What is the experience that you have gathered, and also what pulse that you have seen on ground so far, sir? If you look at the last 5 years of Bharatiya Janata Party government here, we have seen that many projects have been delivered which were hanging for the last good 5-7 years during the Congress rule. People have seen a change, how effective the double engine government was. They have seen the kind of support we have got from the Modi government. And Prime Minister Modi has been very, very kind towards Himachal Pradesh, not only during the BJP rule, but even during the Congress rule. But Congress was not willing to implement all those projects on ground, and Himachal suffered because of that. And I think in these 5 years, we have seen that how Himachal has progressed, especially in the last 5 years. Sir, when we talk about Agnipath scheme, we have heard Defence Minister Rajnath Singh also clearing all the misconceptions surrounding it. But the opposition, specifically the Congress party, have been attacking over it and saying that this particular scheme is there to manipulate the youth and mislead the youth. We have seen the, during the Agnivir overall employment time, how many people came forward. There were 5 times more people who came for the Agnivir recruitment. Now for Agnivir recruitment, if the 5 times more people came, that clearly shows there is a lot of interest among the youth. A lot of people try to create the, misinform them, mislead them. But fortunately, the youth of Himachal Pradesh is very, very educative, very aware, and they know what to do in life. And that is why they got about 5 times more numbers who came here for the recruitment rally. Sir, what's striking that we have seen from the Congress party today, Mallikarjun Kharge himself, he was there, Priyanka Gandhi was there a few days back, but we didn't see Mr. Rahul Gandhi so far yet. So do you think that it is the confidence, or they have accepted that they can't win in the state? See, Congress knows whenever Rahul Gandhi ji come for any campaign, they loses the elections. Maybe they are willingly doing it, maybe they are not accepting him as a face to be in the elections, or Rahul Gandhi is trying to stay away from this. But the big question arises, who are part of Rahul Gandhi ji's yatra? This is the Tukde Tukde gang which used to raise the slogan, Bharat ke Tukde ho Hazar, Inshallah, Inshallah, who used to stick the posters of a country without a post office. If these kind of people are part of the Bharat Jodo Yatra, that clearly showcases what kind of mindset they have. And one after another leader of Congress party is making such statements against Hindu sentiments and the religious such deities, which is not acceptable to anyone. All right, so the ruling BJP is aiming to retain power in the hill state and break the tradition of alternate governments that has been noticed since 1982. The BJP appears confident to buck the 37-year-old trend in the state. Let's listen into what the Chief Minister has to say. जो घोषणा करना हम जो है वो घोषणा करते हैं, इससे समाधान नहीं है. लेकिन जमाने ने इस बात को देखा है कि जो कहा है वो किया तो है नहीं, इसलिए कौन यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा. विश्वास अगर आज की तारीख में है वो भाजपा में है, भाजपा के नेतृत्व में.
All right, we heard that from the Chief Minister himself. As far as Prime Minister Narendra Modi is concerned, he is also tweeting and urging the people there in Himachal to come out and vote heavily. He goes on to say that today is the polling day for all the assembly seats in Himachal Pradesh. I request all the voters of Devbhoomi to participate with full enthusiasm in this festival of democracy and create a new record of voting. My special wishes to all of the youth in the state who voted for the first time on this occasion. Our reporters, they're joining us here from the ground. Sabyasachi, voting has begun. Over to you. Well, absolutely, voting has begun, and let me show you the visuals out here. You can see people have started to come up in large numbers to cast their vote. We'll talk to each of them, get to know what is the pulse on ground. आपसे पूछना चाहूंगा कि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो क्या सोच रही हैं आप, किन मुद्दों पे आप अपना मतदान करेंगे आज? शिक्षा के प्रति, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा में प्रचार हो उसके लिए। तो शिक्षा में क्या बेहतरी चाहती है आप, क्या हो क्षेत्र में, क्या हो? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा के प्रति उत्साह होना चाहिए। ठीक है, विल गेट मोर रिएक्शन। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? रोजगार, इधर। सर, आप क्या कहेंगे, इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं बिलासपुर से? रोजगार चाहिए। हाँ जी। We have some more people, will talk to them. सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। ये दो मुद्दे हैं इस बार के। सर, आप क्या कहेंगे, इस बार के मुद्दे क्या है चुनाव के? हमारा तो मुद्दा यही है कि जो आरक्षण है वो जातिगत तरीके से खत्म होना चाहिए और ये आर्थिक आधार पर दिया जाए। आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव के मुद्दे क्या है आपके लिए? बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी, और ये जो आरक्षण रखा हुआ गया है ना लोगों के, बच्चों के लिए, इसको उठाया जाए। जाति पर विवाद नहीं होना चाहिए, एक जैसा, एक बराबर होना चाहिए सबको। आपको क्या कहेंगे? हम भी बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। Well, there you heard. This is a pulse that we are picking from ground, where unemployment is one of the factor which is coming right now, where people mostly talking about berozgari and also talking about arakshan. So clearly, this particular seat of Bilaspur is very important for the BJP because it is a prestige seat. The Bilaspur comes under the Hamirpur constituency, from where Anurag Thakur is the MP, and in 2007, BJP President JP Nadda has won from this seat, and he is the current BJP President. So it is the battle of prestige for the BJP, whereas one concern which the BJP is facing right now is the rebel problem, because in around 21 seats, the rebel BJP MLAs are fighting on independent ticket. The same thing is happening in Bilaspur as well, whereas one of the rebel candidate who has won in 2017 was not being given ticket this time around, so is fighting on an independent candidate. Though BJP has tried in several number of occasions to pursue this rebel group and make sure that they don't contest, but clearly the battle in Bilaspur is going to be very intense, where the major question arises here in the percentage of vote share. Back to you. All right, thanks very much for the update. We have Sabyasachi joining us, and we also have our other reporters right now. But taking that tweet on air as far as Prime Minister Narendra Modi is concerned, because he's just tweeted and he took to Twitter to urge the people to cast their vote for Himachal Assembly polls and make a new record by participating with full enthusiasm. The Prime Minister also congratulating the youth of the hill state who will be casting their vote for the first time. सीधे तौर पे अब मनोज के पास चलते हैं। मनोज, चीफ मिनिस्टर साहब आए क्या बाहर? थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त यहाँ पर जो मंदिर है उनका घर के पास, वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। अपनी जीत के लिए आशीर्वाद भगवान से लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर साधना ठाकुर, वो भी इस वक्त मंदिर के अंदर है। और आप देखिए, उनकी दोनों बेटियां हैं प्रियंका और चंद्रिका, वो इस वक्त आ रही हैं, वो भी मंदिर में जाएंगी पूजा अर्चना करने के लिए। हमने इनसे बात भी की थी कुछ देर पहले, तो बेटियों ने भी कहा था कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनके पिता दोबारा से सत्ता में लौटेंगे। और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सराज मंडी से, जहां
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। जयराम ठाकुर का यह कहना है कि इस बार जो परंपरा रही है, रवायत रही है हिमाचल प्रदेश की हर 5 साल में सरकार बदलने की, ये परंपरा टूटेगी और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है। डबल इंजन सरकार की बात करती है बीजेपी। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रदेश सरकार है, जो मिलकर काम किए हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनके आधार पर उनका कहना है कि हमने वोट मांगा है और जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ी है, ये इस बात का क्लियर मैसेज है कि बीजेपी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। जी चलिए, धन्यवाद आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो एज फार एज द चीफ मिनिस्टर देयर इज कंसर्न्ड, अ प्रेस्टीज बैटल इसलिए इसे कहा जा रहा है गुरप्रीत, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द सराज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, दैट इज सेड टू बी अ बैस्टन, एक गढ़ माना जाता है ऑफ द बीजेपी। हाउ लॉन्ग एज वी आर एक्सपेक्टिंग द पीपल देयर, हैव दे स्टार्टेड कमिंग ऑलरेडी टू कास्ट देयर वोट? गुरप्रीत। Well, yes, of course, we have seen that from where we are reporting at this point of time. This is the constituency Rampur Bushehr, where we have seen a strong hold of Congress for the last 35 years. We have seen the Congress was winning this election, and now this time a lot of BJP netas also claiming that there is a tough competition. And we are reporting from Pratibha Singh's residence. This is the Veer Badra's palatial palace from where we are reporting, and they are getting ready for casting their votes. We have seen since morning a lot of supporters, they have come here, and election mode is already going on. And if we can talk about the counting has already been started here. So today we have seen Pratibha Singh. She has played a major role because she is the president of the Congress party, and now this seat is the stake of this Veer Badra's family, because a royal family, this belongs to this area, and they are going to cast their vote. And before that, what we have learned from the inside, they are saying they are going to pray in the temple, and after that they will go and cast their vote. So praying in the temple, that is also happening in Saraj, as far as the pictures that we are getting of the chief minister along with his family, who have now first come to worship the deities there, and thereafter will be going to cast their vote. It was in 2017 when Jairam Thakur had won the Saraj seat. He defeated Congress's Shetram Thakur with a margin of over 11,000 votes, and he was the first legislator from the Mandi district to become the chief minister of the hill state. सीधे तौर पे अगर कुंदन हम बात करें तो बीजेपी ने सीधे तौर पे अनाउंस नहीं करा है नाम कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, लेकिन जयराम ठाकुर, अच्छा मनोज, जयराम ठाकुर अपने पूरे परिवार समेत पहुंच चुके हैं। भगवान से प्रार्थना की, सबकी मंगल कामना की प्रार्थना। बड़ा है इस मंदिर जहां पर हम आए, इसके बारे में हमें बताइए, क्या हमेशा इस तरह से शुरुआत होती है दिन की? जी, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर शिमला रहना होता है, पर जब भी मैं गांव में घर पे होती हूँ तो प्रतिदिन ही आती हूँ। ये हमारा डेली का रिचुअल है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साधना ठाकुर बता रही हैं कि जब वो गांव में होती है, दिन की जो शुरुआत है, और खासकर कोई बड़ा दिन होता तो इसी मंदिर से, इसी तरीके से शुरुआत होती है भगवान की पूजा अर्चना के साथ। All right, so the chief minister and his family, they're making their way right after paying their respects at the temple, thereafter moving to the polling station to cast their vote. The first pictures coming in of this morning of the chief minister of the state of Himachal Pradesh along with his family members. The photo op happening now as they are now seemingly saying that they are confident of a repeat of the BJP sarkar in the state of Himachal प्रदेश। कुंदन, एक तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि एक रवायत रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है हिमाचल में। शायद कांग्रेस को इसी से उम्मीद है कि इस बार के जो 5 साल का रिपीट का जो पैटर्न रहा है वो इस बार उनके साथ होगा और कांग्रेस इस बार सत्ता में लेके आएगी। और इसके अलावा जो उन्होंने लगातार अलग अलग स्कीम चलाई, ओपीएस से लेके महिलाओं के पेंशन से लेके, लेकिन जो दूसरा एक पहलू ये है कि हमने देखा कि भारत जोड़ो आंदोलन में लगातार व्यस्त राहुल गांधी ने एक भी रैली यहां पे नहीं की। जिस तरीके के रैली का रिकॉर्ड रहा, 1-2-3 मात्र प्रियंका गांधी जो उनकी सिस्टर है वो जरूर आई थी, और कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा वीरभद्र सिंह होते थे उसके उनकी पत्नी के तौर पे हालांकि प्रतिभा सिंह आई है, लेकिन उस स्टेचर का नहीं है, उस स्केल का नहीं है जिस स्केल पे कभी कांग्रेस यहां पे वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में यहां पे सरकार बना चुकी है। इस वक्त हम हैं भोरंज विधानसभा, जो कि केंद्रीय मंत्री
अनुराग सिंह ठाकुर का अपना विधानसभा है, हालांकि ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और यहाँ पे परिसीमन के बाद डिलिमिटेशंस के बाद 2008 में ये कंस्टिट्यूंसी बनी थी। और ये सीधी तस्वीर आप स्कूल से देखेंगे कि कैसे वोटिंग शुरुआत हो चुकी है। सुबह का वक्त है और लगातार लोग यहाँ से आके निकल रहे हैं और सुबह सुबह बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत भी, उनका ये कहना था कि जो उनकी प्रायोरिटी है वो, एक सज्जन यहाँ से वोट दे के निकले, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो अपना वोट का साइन दिखाइए, ये दिखाइए, इधर कैमरे को दिखाइए। सो ये आप सुबह सुबह अपनी वोटिंग करके निकले हैं, क्या दिमाग में रहता है जब वोट करने जाते हैं? सर दिमाग में तो बहुत कुछ है, नहीं फिर भी कुछ तो वजह रहती है जिससे आप अपने कैंडिडेट को तय करते हैं। वजह तो बहुत है सर, लेकिन क्या बताएं वजह। नहीं आप हमें ये मत बताइए किसको वोट दिए, लेकिन आप वो मुद्दे तो बताइए जिन मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। नहीं, वोट तो हमने मुद्दों के आधार पर किया है, क्योंकि जिसने काम किया है उसको वोट दिया है, और आगे भी आस रखी है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। एक और महिला इनसे बातचीत करते, मैम आपने वोट दे दिया, एक मिनट आपने अपने सिंबल दिखाइए, ये इधर दिखाइए, कैमरे को दिखाइए ऑलरेडी करके। आप एज ए वीमेन हैं, आप यहाँ रहती हैं, आपके दिमाग में जब आप अपने कैंडिडेट्स को वोट देती हैं तो क्या सोच के देती है, क्या मुद्दे रहते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहती है? सर जो हमारे बारे में सोचे वो इसी को। हाँ जी सर। क्या रहती है? जो हमारे बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। क्या मौजूदा सरकार लगता है कि आपको जनता के आपके बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है? सर बोलते हैं वैसे, जैसे गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पेंशन के बारे में, ये बच्चों को मतलब जॉब के बारे में। विमेन सिक्योरिटी भी इशू है यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा। जी सर, हाँ जी, वो तो बहुत जरूरी है सर, वो जरूरी है। हाँ जी। सो कुल मिला के देखिए कि कैसे सुबह सुबह लगातार लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं और करीब 10:30 के करीब में यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह धूमल, वो यहाँ से वोट कास्ट करने आए हैं। और ये कतार देखिए, लंबी कतार, और लगातार बिल्कुल। और हमीरपुर की बात करें तो इसे वीर भूमि भी कहा जाता है, बिकॉज गोइंग इन द डिफेंस सर्विसेज इज द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शन फॉर द यंगस्टर्स देयर। गुरप्रीत, ओवर टू यू। रामपुर बुशहर में है, काफी परंपरागत सीट है ये। Well, we can see Pratibha Singh. She is here, so she is talking to media persons here. So now, if we can talk about this Rampur Bushehr, where these leaders, these netas, they are getting ready to cast their votes. So all these things are happening at the ground. So Vikramaditya, he is also present here, as well as Pratibha Singh. She has been campaigning all over the state. So that is one of the major issues. So we will also try to talk to her to understand that what type of undercurrent she is getting feedback from all over the state, what type of response from the Congress netas she is getting. So all these things are being monitored by the Congress netas. So we have seen that there is a fight between BJP and Congress that is going on, and they are also trying to get the feedback from all the netas from the various constituencies. Since morning we have seen a lot of supporters, they are coming here, they are meeting Pratibha Singh. So we will try to talk to her to find out that what will be the feedback from all over because unemployment as well as inflation was one of the major issue at this point of time, which was raised by the Congress, and Congress say once they are going to come into power, they will definitely revive that old pension scheme. That is one of the main scheme which is being launched by the Congress, because Congress feels that is the only agenda which is left with them, and with that they will be able to get a chunk of employees vote bank from the Congress. So we will try to talk to Pratibha Singh to find out that what type of response she is getting from all over the constituency. So that is the main question. So the dynastic politics, that Congress is getting a lot of attack from BJP and double engine sarkar by the BJP netas. So that is the main issue which is being raised, and we have seen that Prime Minister Narendra Modi has already tweeted asking for the Himachal people to come and vote. So let's see that what type of response they are getting. So we will talk to Pratibha Singh. A lot of reaction from the various constituency they are getting. So we will try to talk to Pratibha Singh. So
But Gurpreet, ये जरा पूछिएगा, especially when Pratibha Singh seeks 2 times now, because the polling that has now begin, just as far as Congress party campaigning is concerned, because this time around Priyanka Gandhi Vadra was there, present there, but Rahul Gandhi wasn't there. He skipped and he participated in the Bharat Jodo Yatra. With those first pictures that are coming in of the polling stations, as well the first pictures of the voting that is now begun in the state of Himachal Pradesh. In the meantime, let's quickly listen in to other reactions also coming in. और जो छोटे से छोटे व्यक्ति था उसके अकाउंट खुलवाए गए। ठीक है लड़कियों के लिए। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? तबस्सुम। क्या अपील करेंगी वोटर से कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? जी बताएं। अच्छी सरकार हो, लोगों की बात सुने, सब काम करें। शिमला शहर में वोटिंग कम होती है, ज्यादा We'll talk to her. So, ma'am, what the response of the Congress datas from all over the state? We have seen that you have been campaigning all over the state. देखिए, हमने काफी चुनाव का प्रचार किया है, जनता के बीच में गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का सहयोग हमें मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। Ma'am, this time we have seen Rahul Gandhi was missing in the campaign. We have seen that he did not come. Priyanka Vadra, she has come. Do you think that will be also leave a lot of impact on the voters' mind? People know that Rahul Gandhi is also on a very important mission, Bharat Jodo Yatra he is doing, which is equally important. He is traveling on foot. He is making an appeal to the people that Congress should come back to power. So he is making an every effort. Everybody knows that. And Priyanka ji was kind enough. She came, we requested her, and she visited many places where she appealed to the people that this time Congress government should be given an opportunity to form the government. BJP has been leveling a very, very serious allegation every time. They are saying that Congress is believing in dynastic politics. Do you think that this time in Himachal Pradesh, you people will be able to counter this dynastic politics allegations by the BJP? ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी कहती है हर बात का जवाब हमें देना जरूरी नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात करो, हिमाचल को आगे बढ़ाने की बात करो। आप क्यों ऐसी बातें करते हुए डायनेस्टी की बात कर रहे हैं या कोई लेगेसी की बात कर रहे हैं? ठीक है, परिवार वीरभद्र सिंह जी का ऐसा रहा है जिन्होंने जनता की सेवा की है और आज भी हम इसी मोटिव को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर बात करें तो what were the main issue? We have seen you are raising unemployment, inflation as well as the old pension scheme. Do you think the people will be able to come into your kitty this time because they feel there was no development? ऐसा है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज वाज अ मेजर इशू। इस करके लोगों में बहुत नाराजगी है कि 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। So now banking on changing the tradition, as far as banking heavily on rather when it comes to the tradition that has seen alternate governments in every 5 years in the state of Himachal Pradesh, despite Rahul Gandhi not campaigning in the state of Himachal. We'll continue with those live updates coming in from the hill state of Himachal after a short break. Stay tuned.